And we start this edition with the latest that's coming in on the floor test slated for today in the Jharkhand Assembly. Now, ahead of the floor test, Section 144 has been imposed near the Jharkhand Assembly. The stage is, of course, set for that floor test to happen in just hours from now. And with that, the BJP has upped the ante against the JMM and the Congress alliance in the state. So a lot of political reactions as well coming in, with leaders from the JMM, Congress and the BJP trading barbs at one another. In fact, listen in to the reaction that's coming from the BJP upping its ante against the JMM and the Congress. The one thing is clear, Jharkhand has clearly lost. The way Jharkhand was humiliated in front of the national and international community is absolutely shocking. A chief minister was a fugitive on the run for 40 hours without any trace, without any contact with the top officials of the state. The state people of the state were left at their own mercy. And the way the chief minister was accused of 70,000 crore corruption, and he had to step down. He was then arrested. मुझे लगता है औपचारिकताएं हैं। फ्लोर टेस्ट, क्योंकि नई सरकार है तो फ्लोर टेस्ट कराना होगा, परंतु जो आंकड़े हैं और जितनी एकजुटता है इंडिया गठबंधन में, विरोधियों के हौसले पस्त है। हम लोग को जो उम्मीद है, जो आंकड़े दिखते हैं 48 की, उससे भी ज्यादा बढ़ सकता है, एक हाथ और बढ़ सकता है, ऐसी संभावना है। तो पूरी तरह से इस संकट की घड़ी में पार्टी एकजुट, गठबंधन एकजुट, तमाम झारखंड वासियों का नैतिक बल साथ में और विरोधियों का पस्त हौसला, ये एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। और आज कहीं कोई परेशानी नहीं है, इतना मैं बता दूं आपको। जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। मुख्यमंत्री भी शामिल, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी शामिल, बिल्कुल वो शामिल हो रहे हैं अदालत के आदेश से। वो हमारे बीच रहेंगे, विधायकों के बीच रहेंगे, वोटिंग करेंगे। एक सुखद पल होगा हम लोगों के लिए, उनका एक झलक मिले और उनके मात्र उपस्थित रहने से ही एक ताकत का संचार, ऊर्जा का संचार होता है। तो उनके आने से एक खुशी का माहौल है, वो आएंगे, हम लोगों के बीच रहेंगे। हम लोगों की शुभकामना है। 2019 के पहले इस गठबंधन ने जनता और युवाओं से कुछ वायदे किए थे। 4 सालों में उन वायदों को उन्होंने पूरा करने की जगह भ्रष्टाचार को प्राथमिकता दी, और जिसके कारण हेमंत जी की सरकार चली गई। फिर चंपाई जी ने शपथ ग्रहण किया है, उनका 1 साल का कार्यकाल है। उम्मीदें हैं कि झारखंड के जिन सवालों को लेकर के और जिन विषयों को उठा करके आप सत्ता में आए थे, जो हेमंत जी नहीं कर पाए वो आप करें। लेकिन जिस तरह के बयान उनके आ रहे हैं, लगता है कि भाई पिछली सरकार की ही पट्टी छाया बनेगी। तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार और बाकी जो लॉ एंड ऑर्डर सहित जितनी भी गड़बड़ियां हैं उसको आप आगे बढ़ाने वाले हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके कहीं न कहीं सत्ताधर के विधायकों में अंतर्द्वंद, अंतर्कलह भी है। एक तरफ वो चाहते हैं कि भाई एक ऐसी सरकार बने कि चुनाव में आते उनको जनता के मूड से और जनता से उनको सामना करके वापस वोट लेना है। दूसरी तरफ पद और पदोन्नति का एक विषय भी है। इन सारी चीजों के कारण उनको 3 दिन झारखंड में सरकार रहने के बावजूद भी बाहर ले जाकर के रखा गया, कैद करके रखा गया, 4-5 पुलिस के कस्टडी में रखा गया। एक तरह से आज आए हैं, अभी भी उन लोगों को कस्टडी में ही रखा गया है। विधानसभा में जाएंगे तो उनका अंतर्मन भी क्या कहता है, आज हम सब लोग इस बात को जानना चाहेंगे। सिर्फ झारखंड नहीं, पूरा देश जानना चाहेगा कि भाई आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों आई कि 5 साल के लिए एक चुनी गई सरकार 4 साल में ही त्यागपत्र देना पड़ा। All right, so there you heard the LOP reaction, while the BJP claims that the JMM and the Congress are jittery ahead of the floor test. The JMM and the Congress maintain that they have support of 43 MLAs. Now, ahead of this floor test that would take place in just hours from now, legislators from the JMM-led ruling alliance have now flown
been flown from Ranchi to have been flown to Ranchi from Hyderabad, which comes after former Chief Minister Champai Soren was even granted permission to take part in the crucial floor test that will take place today. Ahead of the floor test in the Jharkhand Assembly, the ruling coalition MLAs returned to Ranchi from Hyderabad. Here is what one of the MLAs had to say. अभी हम लोग बिरयानी खा के आए हैं, जो बोले थे कि हैदराबादी बिरयानी। अभी हम लोग बिरयानी खा के आए हैं, जो बोले थे कि हैदराबादी बिरयानी वही। Last week, the JMM had shifted 40 MLAs of the Grand Coalition to Hyderabad to avoid poaching attempts. The ruling coalition in Jharkhand comprises 47 MLAs out of the 81 members in the assembly. Newly appointed Jharkhand Chief Minister Champai Soren will have to prove his government's majority today in the state assembly. Champai Soren's government appears all set for sailing through the floor test. Bureau Report, Republic TV. Brace yourselves for a revolutionary leap into the world of news with the Republic World app. We are not merely presenting a news app. We at Republic TV are ushering in a new era of digital news consumption. The Republic World mobile app has the essence of power of breaking news and the heartbeat of our impactful shows seamlessly integrated into a singular dynamic platform for you. Join us, viewers, in an experience that goes beyond conventional news reporting. Don't merely witness the news, become a part of it. Download the Republic World app, now available on both the Google Play Store and the Apple App Store. Brace yourselves for a revolutionary leap into the world of news with the Republic World app. This is not just an app, viewers. It's a direct conduit to a world of news delivered with unparalleled authority and integrity right at your fingertips. Republic World app is your gateway to the latest updates, live streams, and the debates that have become the hallmark of our journalistic prowess. Download Republic World app, available on Google Play Store and Apple App Store. Brace yourselves for a revolutionary leap into the world of news with the Republic World app. We are not merely presenting a news app. We at Republic TV are ushering in a new era of digital news consumption. The Republic World mobile app has the essence of power of breaking news and the heartbeat of our impactful shows seamlessly integrated into a singular dynamic platform for you. Join us, viewers, in an experience that goes beyond conventional news reporting. Don't merely witness the news, become a part of it. Download the Republic World app, now available on both the Google Play Store and the Apple App Store.